So today we are finding what is the force. Okay, so in this topic, first thing is that the Newton's law of motion is very important thing. So Newton gives us three laws of motion. Okay, so we are learning first law of the motion. So first law is that every body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is applied by external force to change that state. So what is this? So जब कोई body in a state of rest, so these laws of motion are applied to a vacuum condition. This is the first thing we have to understand. First thing, this is only for a vacuum condition. Vacuum. Okay. So when the state of what is the state of rest? When one this is the one particle or one stone. When it is in a state of rest means ये हिल नहीं रहा किधर भी. So this is the state of rest. So ये body wants to be in a state of rest uniformly. And second one is when this stone is in vacuum in a linear motion or uniform motion, it wants to be in a uniform motion throughout its path. This is the first law of the motion. Unless, so this is very important. ये बहुत ही देखो, जब तक कोई अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते तब तक बॉडी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी और जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. So we are now reading the second law of the motion. Okay, the rate of change of the momentum of the body is directly proportional to the impressed force and take place in the direction of the force. Okay, so this is the second law of the motion of Newton's law. So change of momentum of a body, okay, is directly proportional to the impressed force and take place in the direction of the force. So in this, impressed force is equal to F and change of momentum, that is, we know momentum is equal to mass into velocity. Okay, mass into velocity is momentum and change in momentum, that is mass into acceleration. So here we take this mass into acceleration. So from the second law of the motion, we know that F is equal to AV. Okay, and third one is that the third law of the motion is to every action there is always on equal and opposite reaction. So मान लीजिए कि एक स्पेसशिप या रॉकेट हमें अर्थ से बाहर बाहर डालना है तो क्या करना होगा कि इसको ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो है 9.81. सो इतने फोर्स से ये इसको नीचे खींचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स. सो हमें ये फोर्स नीचे खींचेगा. सो इतने फोर्स से अगर हम उसको ऊपर उठाएंगे, ओके, तभी ये ऊपर जा पाएगा. So what we learn, to every action there is always an opposite, equal and opposite reaction. So जब भी कोई reaction होता है तो इसका for every action there is always equal and opposite reaction. So it is very easy to understand Newton's law of motion. Okay, so next point is inertia. So what is the inertia? So inertia, we are first thing, the first law of the motion is called the inertia of inertia. Okay, so what is the inertia? Tendency of a body to maintain its state of rest and state of uniform motion in a straight line is called its inertia. Okay, so जो बॉडी है, जो स्टोन है, वो एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट में वो थंबा हुआ है तो वो थमने की कोशिश करेगा. और सेकेंड वन इज जो स्टोन आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. तो ये है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द स्टेट. सो इनर्शिया ये है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा और जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करेगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज फोर्स. सो द पॉइंट इज व्हाट इज द फोर्स. द फर्स्ट वी आर reading the definition of the force. Okay, it is defined as a physical quantity which change or tends to change state of rest or uniform motion of body in a straight line. Okay, so force क्या है कि ये जो inertia है, बॉडी की टेंडेंसी है कि वो एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. तो हमें क्या करना है, एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सटर्नल चीज़ है, सो ये मैन मेड है, तो हम उसको लगाएंगे. और जो स्टेट ऑफ रेस्ट वाली स्टोन है और एनी बॉडी है और यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी है उसको फोर्स लगाएंगे और उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स. द फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और फोर्स इज इक्वल टू मास. दिस इज द सिंपल टर्म. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड यूनिट इज फोर्स का यूनिट है न्यूटन और न्यूटन इज ऑल्सो
known as 10 raised to 5 dynes.